Shiv Sena's mouthpiece Samna has called the UPA dead man walking as it stressed on the need to unite the opposition. Samna slammed UPA, saying that even after a month, the stir has failed to yield any result because the central government does not think there is any political threat to them. The editorial went on to say that in any democracy, the opposition plays an important role, but the Congress and the UPA have failed to put pressure on the sitting government on issues concerning people. Turning its focus on Rahul Gandhi, Samna editorial said that while the Congress MP is doing enough, something is lacking in his leadership and the grand old party needed a full-time president. In fact, the editorial further suggested that UPA needs a revamp and Sharad Pawar is the only visible face. The editorial also added that only Pawar can bring on board other parties like Mamata Banerjee's TMC, which are currently reluctant to come on board with the UPA's fold. बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है, मोदी जी का नेतृत्व मजबूत स्थिति में है, लेकिन उनके सामने यूपी और यूपीए जो है उनको भी एक संग एक मजबूत ताकत के रूप में हमको बनाना पड़ेगा। ये हमने आज कहा है। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। इस प्रकार का अपमान वो कब तक सहेंगे? क्या सिंहासन के लालच में कांग्रेस ने अपना स्वाभिमान खो दिया है? लिखते समय शिवसेना नेता यह भी भूल जाते हैं कि वे भी एक विरोधी दल में हैं। केवल और केवल शरद पवार जी की चापलूसी छोड़ करके इन्हें और कुछ दिखता नहीं है। सत्ता की लालच में इन्होंने मां गांधारी के भांति अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखी है। ये पट्टी कब खुलेगी, ये सवाल है। देखिए, कांग्रेस में तो कांग्रेसी नेतृत्व के खिलाफ बगावत हो ही रही थी, अब यूपीए के अंदर भी बगावत हो गई है। जो शिवसेना सत्ता की मलाई खा रही है महाराष्ट्र में कांग्रेस के सपोर्ट से, वो भी कांग्रेस नेतृत्व को, सोनिया जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। क्या होगा कांग्रेसियों का? Well, it's likely that the Congress will not react to it very nicely, but the official reaction from the Congress is yet awaited. The important point here is that Shiv Sena is saying that other regional parties like the Trinamool Congress have to come together, and UPA will have to have a strong leader so that a strong opposition can be pitched against Narendra Modi and the BJP. They have also, because complimented Sharad Pawar, it is a direction in which the Shiv Sena is slowly moving, that they think that in the coming near future the opposition in India would be led by Sharad Pawar, and hence Sharad Pawar is also going to meet Mamata Banerjee in West Bengal. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.